American blood, including the blood of 241 Marines murdered in Beirut. We accomplished all this with the indomitable spirit of our people and the boundless courage of our soldiers. The Bible says that the people of Israel shall rise like lions, and boy did we rise. Today, the roar of the Lion of Judah is heard loudly throughout the Middle East. Israel has never been stronger, and the Iran terror axis has never been weaker. But as we discussed, Mr. President, to secure our future and bring peace to our region, we have to finish the job. In Gaza, Israel has 3 goals: destroy Hamas's military and governing capabilities, secure the release of all of our hostages, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. I believe, Mr. President, that your willingness to puncture conventional thinking that has failed time and time and time again, your willingness to think outside the box with fresh ideas will help us achieve all these goals. And I've seen you do this many times. You cut to the chase. You see things others refuse to see. You say things others refuse to say. And after the jaws drop, people scratch their heads and they say, you know, he's right. And this is the kind of thinking that enabled us to bring the Abraham Accords. This is the kind of thinking that will reshape the Middle East and bring peace. We also see eye to eye on Iran. That's the same Iran that tried to kill us both. They tried to kill you, Mr. President. They tried through their proxies to kill me. We're both committed to rolling back Iran's aggression in the region and ensuring that Iran never develops a nuclear weapon. Mr. President, ladies and gentlemen, Israel will end the war by winning the war. Israel's victory will be America's victory. We will not only win the war, working together, we will win the peace. With your leadership, Mr. President, and our partnership, I believe that we will forge a brilliant future for our region and bring our great alliance to even greater heights. Thank you. Thank you very much, baby. Very nice. Thank you. J.D. Vance, everybody. J.D., please, Vice President, stand up. He's been doing a good job. He's been working very hard on all things, but this in particular. We'll take some questions, please. Yes, ma'am. Go ahead, please. Go ahead. Yeah, go ahead. Mr. President, can a normalization deal with Saudi Arabia be achieved without the acknowledgement of a Palestinian state? That question for you too, Mr. Prime Minister. And Mr. President, given what you've said about Gaza, did the U.S. send troops to help secure the security vacuum? So Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. We know their leader and their leaders very well. They're wonderful people, and they want peace in the Middle East. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that peace, and we're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. But everybody feels that continuing the same process that's gone on forever, over and over again, and then it starts, and then the killing starts, and all of the other problems start, and you end up in the same place, and we don't want to see that happen. So by the United States, with its stability and strength, owning it, especially the strength that we're developing and developed over the last fairly short period of time, I would say really since the election, I think we'll be a great keeper of something that is very, very strong, very powerful, and very, very good for the area, not just for Israel, for the entire Middle East. Very important. And we'll, again, have thousands of jobs, and there'll be jobs for everyone, not for a specific group of people, but for everybody. Okay, please. I think peace between Israel and Saudi Arabia is not only feasible, I think it's going to happen. I think if we had another half a year,
in your first term. It would have already happened. True. Many more. I agree. Many more nations. I think you can't prejudge and pre-guess how we'll achieve it, but I'm committed to achieving it. And I know the president is committed to achieving it, and I think the Saudi leadership is interested to achieve it. So we'll give it a good shot, and I think we'll succeed. Yeah, please go ahead. First of all, President Trump, did you hear from Prime Minister Netanyahu at your meeting guarantees that ceasefire will hold, including phase 2? And Prime Minister Netanyahu, why are you refusing to set up a national commission to investigate the failure of October 7th? Well, I can't tell you whether or not the ceasefire will hold. We've done, I think, a very masterful job. We weren't helped very much by the Biden administration, I can tell you that. But we've gotten quite a few hostages out. We're going to get more out. But we're dealing with very complex people. And we are going to see whether or not it holds. We certainly want to have more come out. They've come out damaged in many ways, very damaged people. But they're going to get better, and they're going to be strong, and they're going to have a good life. And we hope to get as many as possible out. Whether or not it holds, I don't know. We hope it holds. We hope it holds. I think that at the appropriate time, which I think will enable us to really investigate what happens, what were the causes of the failures, by an independent commission that will be accepted. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जल्द गज़ा पर कब्ज़ा कर लेंगे और इसके मालिक होंगे। ट्रंप ने कहा कि बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम मुआहदे में शामिल होंगे। नेतन्याहू के साथ मुलाकात में हमास की यकीनी खात्मे के तरीक़ाकार पर तबादला ख़याल हुआ। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूयॉर्क से ब्यूरो चीफ मोविस असद सिद्दीकी साहब। मोविस साहब बताइएगा, ट्रंप ने जो ऐलान किया है गजा पर कब्जे का, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पे इन्होंने जो पहली अपनी सूरत हाल पेश यही की थी कि ये जंग बंदी करेंगे, और जंगी बंदी के बाद के जो अज़ाइम थे उसको उन्होंने कभी भी जाहिर नहीं किया। लेकिन आज जिस तरह बिल्ली थैले से बाहर आई है और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके का इरादा इन्होंने जाहिर किया है कि वो जो है उसको खाली करना चाहेंगे, उसके सिलसिले में ये बहुत सारे काम पहले से अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि एक इब्राहिम अकॉर्ड इन्हीं के ज़माने में शुरू हुई थी, जिसमें यही तकरीबन प्लान था कि जो यही प्लान था कि वो गजा को खाली करवा के और उसकी जगह जो है कुछ और तामीरात करवा के और उसको आहिस्ता आहिस्ता खाली करवाएंगे। लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड ही के नतीजे में ये वाक़या हुआ था और उसके बाद बहुत से अरब ममालिक जो इसका हिस्सा बनना चाह रहे थे वो पीछे हट गए थे। लेकिन इस मरतबा इन्होंने बिल्कुल नया तरीक़ाकार इख्तियार किया है और इससे पहले इन्होंने अपनी जितनी भी इंतखाबी मुहिम हुई थी उसमें कभी इस तरीके से खुल के इजहार नहीं किया था। लेकिन आज जो है उन्होंने इस बात का इजहार किया और इस पे सवालात भी किए जा रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी भी है, इस पे सवालात किए जा रहे हैं और अब यही देखना है कि इस वक्त जो ये मुस्लिम ममालिक को ऑन बोर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर वगैरह को, क्या वो इस बात के जामिन होंगे, क्या इस बात की गवाही वो बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक ऐसा खित्ता जो आज़ाद खित्ता था जिस पर पहले से एक गासिब हुकूमत ने अपनी जो है वो जालिमाना तरीके से कब्जा किया और उसके टुकड़े करते चले गए और आज बहुत महदूद कर दिया। उसके बाद अब जो है दोबारा इस वाक़े को बहाना बनाते हुए वो किस तरीके से कर सकते हैं या नहीं। जिस तरीके से उन्होंने अपना आते ही जिस तरह के अपने उन्होंने अज़ाम ज़ाहिर किए हैं, जिस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक डिक्टेटरशिप वाली होती जा रही है और अब लगता ही है कि शायद दुनिया में वो समझते हैं कि कोई उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है मुस्लिम दुनिया के लिए भी और अभी बज़ाहिर उनके पास तमाम ताकत भी मौजूद है। अब देखना ये है कि इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दुनिया को नया क्या पैगाम देती है। जी मोविस साहब, ट्रंप ने जैसे ये भी कहा कि बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम मुआहदे में शामिल होंगे, तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हो सकते हैं जो इस मुआहदे में शामिल हो सकते हैं? सबसे पहले बात ही सऊदी अरब से चल रही थी, जो कि बज़ाहिर इस वक्त नज़र ये आता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा तर्जुमान बन के, लेकिन जब शुरू में भी इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये इनका पहले का मंसूबा नहीं है बल्कि इनके पिछले साल का मंसूबा था। इससे पहले भी यरूशलेम में ये एम्बेसी जो है वहाँ इसराइल की शुरू कर चुके थे और उसके बाद ये ऑन बोर्ड करना चाह रहे थे कि पुरअमन तरीके से बताना चाह रहे थे और इस तरीके से ये वहाँ की बस्ती को, जो इसराइल की पुरानी ख्वाहिश है कि इस बस्ती को किसी तरीके से खाली करवाया जाए, क्योंकि ये हर मजहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है।
یہ عیسائیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے، تینوں کے لیے بہت اہم ہے، اور اس وجہ سے اس بستی کو خالی کرا کے وہاں سنہرے باغ دکھانا چاہ رہے تھے کہ وہاں مزید تعمیرات کریں گے، اور اس دوران جو ہے وہ ایک آبادی کو موو کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت سعودی عرب ہے، قطر ہے اور مصر خاص طور پہ جو بہت بڑا جو ہے اسرائیل کا الائی ہے، ہر موقع پہ ہوا ہے، وہ مصر، یہ 3-4 ایسے ممالک ہیں جو کلوز کے، ہم اردن جو ہے اس کو سب کو شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس ابراہیم اکارڈ کے نتیجے میں کیا یہ پوری آبادی